Welcome to Policy Pulse. This is an initiative of the Chaudhry Nazar Department of Economics at the Lahore University of Management Sciences to disseminate policy-relevant research to the broader audience. In today's podcast, we're going to discuss taxation and tax compliance, but we're going to look at this from a very interesting lens of applied research. I'm Farah Said. I'm an assistant professor of economics at the Department of Economics here at LUMS. And my guest today is Dr. Sher Asad, an assistant professor at the Department of Economics at LUMS. He's also a visiting assistant professor of economics at the Iowa State University. Dr. Asad completed his PhD in economics from the Iowa State University, and he holds master's degrees in economics from LUMS and a bachelor's degree from FC College. He's also amongst the handful of applied economists in Pakistan who are working in this very challenging field of public finance and taxation. So we are very excited to have him with us. Welcome, Sher, and thank you for your time today. Thank you, Farah. Pleasure to be here. So I want to jump right into some very interesting work that you're doing. But before we get into that, I was hoping that you could maybe lay out the context for us. So from a very foundational kind of a question, why is the issue of taxation such a crucial issue for countries like Pakistan? Okay, great. So let me start by outlining कि taxation जो है for any country और mostly अगर आप एक resource rich country नहीं है, so for example अगर Saudi Arabia नहीं है या कुछ oil rich country नहीं है, तो why do you need to rely on taxation, right? So mostly जो governments हैं all over the world, they tax for various purposes और उसमें जो एक primary purpose है वो है कि हमने public services provide करनी है. There are things that private markets cannot provide. So, for example, think of education in poor regions, health in poor places in the country. वहाँ पे we see कि अगर आप private sector पे छोड़ते हैं तो we will not have those services provided क्योंकि लोगों में demand नहीं है या वो उस पे नहीं है. So that's where the role of public sector is there कि government को intervene करना पड़ता है और government has to provide those services. अब it's not just health, education, of course इसमें you can think of infrastructure, you can think of law and order, you can think of all the things that state has to do in a country ताकि country में एक thriving economic activity generate हो, एक thriving private sector हो और economic growth ensue उससे. So taxation sort of does that for the government. So it allows government to raise those resources that they then can use to provide those public services, maintain law and order, ensure that the businesses have the thriving environment that they face और उसके अंदर वो grow कर सकें और business कर सकें. Of course, taxation को beyond public services, there is important purpose कि हम tax करते हैं equity maintain करने के लिए. So there are people who are high income people who are earning a lot more than low income people. तो एक मकसद टैक्सेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है कि यू टैक्स द रिच एंड यू ट्रांसफर इट टू द पुअर ताकि आपकी किसी सॉर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंश्योर हो सके. और इसके अलावा हम टैक्सेशन को वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसको उस तरह से नहीं सोचा जाता, वो ये कि शेपिंग पीपल्स इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. आप जिस चीज़ को ज़्यादा टैक्स कर रहे हैं वहाँ पे लोगों का इंसेंटिव टू टेक ऑन दैट एक्टिविटी माइट lower because उसमें टैक्स आता है, right? So जब भी टैक्स किया जाता है it is changing how people are going to respond to in real life in the decisions they make. और उसका एक allocation जिसको हम distortionary effect भी बोलते हैं वो उसका एक वो effect भी आता है. So taxation उस लिहाज से is a very important topic और उसमें अगर हम देखें तो it sort of touches on all aspects of the economy कि किस तरह से हम टैक्स कर रहे हैं. जो मेन इसमें चैलेंज पाकिस्तान के केस में ये है एज़ वी ऑल नो कि पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी है जहाँ पे हमारे एक लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि कम्प्लीटली एक आउटसाइड द टैक्स नेट ऑपरेट करता है, राइट? तो थिंक ऑफ आप अगर लाहौर में हैं तो यू थिंक ऑफ यू गो टू आपके शाहलमी मार्केट चले जाएँ जहाँ पे होल सेल रिटेलर्स बैठे हुए हैं, लाखों की करोड़ों के बिजनेसेस ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं डेली बेसिस पे एंड दोज पीपल आर नॉट पेइंग अ पेनी टू द गवर्नमेंट, राइट? सो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा नॉन कंप्लायंस है. सिमिलरली थिंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ वन अनदर बिग पॉकेट कि आपके इकॉनमी का 20% हिस्सा इज़ एग्रीकल्चर बट मोस्ट ऑफ दैट सेक्टर ऑपरेट्स आउटसाइड द टैक्स नेट. उसमें या तो एग्जेम्पशंस हैं या तो इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू टैक्स एग्रीकल्चर क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू नो कि एक्चुअल एग्रीकल्चर इनकम किसकी कितनी थी और उस वजह से हिस्टोरिकली पाकिस्तान में हम अफेक्टिवली एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर सके हैं. दिस इज़ वन एरिया विच इज़ आउट ऑफ द स्कोप. एंड इसको अगर आप कंबाइन करें वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे स्टेट की जो कैपेसिटी है जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी एबिलिटी टू एनफोर्स एंड कलेक्ट टैक्सेस इज़ वेरी वीक.
राइट? तो वो है. एंड देन add to that, which is very close to my heart, and this is something I'm studying in one of my projects as well, वो है हमारे एक social norms का role. So nobody really feels like कि यार मुझे टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि हमने टैक्स ना पे करना को नॉर्मलाइज कर दिया. इट्स लाइक इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर आप नहीं पे कर रहे हैं. इट्स लाइक इवन अगर आप पे कर रहे हैं तो वो समझा जाता है कि यार दिस पर्सन इज समथिंग रॉन्ग, आइदर इसके कोई कनेक्शन नहीं है या इसके साथ कोई मसला है जिसकी वजह से ये टैक्स नहीं पे कर रहे. तो हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है. एंड इट्स जस्ट लाइक यार अगर आप बिज़नेस के लिहाज से सोचें तो बिज़नेस के लिए ये एक सेंस आती है कि यार वाई शुड आई pay taxes or why should I charge taxes to my customers when the businesses that I'm competing with वो तो टैक्स चार्ज नहीं कर रहे. सो व्हेन एवरीवन इज थिंकिंग लाइक दैट, सो आपके पास एक ऐसी एनवायरनमेंट बन जाती है कि कोई एक बंदा इज़ नॉट गोइंग टू स्टेप अप एंड स्टार्ट पेइंग, क्योंकि सारे मेरे इर्द गिर्द नहीं पे कर रहे, तो वाई शुड आई बी. तो क्योंकि रैशनल चॉइस तो ये है कि आई शुड नॉट पे टैक्स दैन, क्योंकि नोबडी एल्स इज डूइंग. और ऑफ कोर्स यू हैव लाइक वीक स्टेट विद दैट, एनफोर्समेंट आप नहीं कर सकते. और सो दैट्स आई थिंक दैट्स ऑल ऑफ दीज इशूज सॉर्ट ऑफ कंबाइंड इन अ वे कि अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हम वन ऑफ द हमारा इनकम स्टार्टर्स, वी आर अ लो मिडिल इनकम कंट्री. लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें कि हम अपनी इकॉनमी का कितना % और कितना फ़ीसद टैक्स में कलेक्ट करते हैं, सो ये जो रेशो है जिसको इकोनॉमिस्ट टैक्स टू GDP रेशो बोलते हैं, ये कह लें कि 10% के करीब 8 से 11% के करीब होवर करती रहती है. पॉलिटिशियन इस पर आर्ग्यू करते रहते हैं जी हमने इसको 10 पे ले गए, कोई कहता है 11 पे ले गए, बट हिस्टोरिकली हम 8 से 11 की रेंज से बाहर नहीं आ रहे. और ये वो रेंज है जहाँ पे मोस्टली लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो इस पे आपको मिलती हैं. सो मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ आर गोइंग टू बी इन दिस रेंज. अगर आप मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ को देखें तो इंडिया फॉर एग्जांपल इज़ एट अबाउट 16%, उससे भी आगे हैं. उसकी अगर आप हाई इनकम कंट्रीज़ पे चले जाएँ तो दैट्स अबव 30%, राइट. सो पाकिस्तान जो है वो इट फाइंड इटसेल्फ, इवन दो हम इट्स नॉट कि वी आर नॉट डूइंग इनफ, हम रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, बट आवर टैक्स कंप्लायंस और द टैक्स टू GDP रेशो हैज़ स्टेड अराउंड दिस range, और उसको हम for some reason we are not able to get out of this. So this is where we are. This is how the state of taxation is, and that's why it's very interesting area to think about. इसमें हम क्या कर सकते हैं? So if I understand you correctly, when you say low tax to GDP ratio or tax compliance low है, so there are two issues then. एक तो ये है कि लोग tax net में है नहीं. And you explain that this is almost like a rational choice. They don't want to be in the tax set. Why should they? When if they are in the tax set, they have higher costs than the competitors, for example. But एक ये भी केस है कि जो लोग टैक्स नेट में हैं, जिनका हमें पता है कि वो फाइलर है, वो नल फाइलर हैं. So at this point, from your own work, maybe you've done a lot of descriptive work, I think, while you were laying out some of these experiments. Which is the more challenging issue for Pakistan? Is it the fact that we don't have enough people in the tax net, or is it that even those who are in the tax net aren't actually paying tax? So you do 10% है tax to GDP. It's actually just a handful of taxpayers who are probably responsible for it. Exactly. इस वक्त हमारी I think you were part of that conversation जो last month LUMS ने Pathways to Development Conference organize की थी. उसमें we had a keynote lecture from Dr. Nazar and he explained कि पाकिस्तान में जो हमारी जो फोकस है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडिंग द बेस के ऊपर है कि हम कोशिश ये करें कि हम फाइलिंग बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट पे लेके आएँ. और उसमें what end up happening in पाकिस्तान है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नल फाइलर्स या जंक फाइलर्स वो आते जा रहे हैं, जो कि नंबर्स पे तो आपको लगता है कि यार हमारे 6 मिलियन फाइलर्स हो गए हैं और हम वो एक नंबर गेम हम बढ़ाई जा रहे हैं. बट दैट इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू इंक्रीज़ इन रेवेन्यू कलेक्शन. सो हमें दूसरी साइड पे ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही. और इफ़ यू लुक एट कि हु इज़ रियली पेइंग टैक्सेस, तो पाकिस्तान में जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस हैं, जो आपके आई थिंक मज़र हैड वेरी नाइस पिक्चर्स ऑन दिस कि हमारा जो 80% टैक्स है वो टॉप के कोई 10% से भी कम लोग हैं जो कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और जो हमारी 60% आबादी है, दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स, राइट. वो फाइल कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ द फाइलिंग सिस्टम, बट उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द ओवरऑल टैक्स कलेक्शन वो नहीं है. सो इन अ वे द मज़र्स पॉइंट वाज कि हम बहुत ज़्यादा बर्डन कॉज कर रहे हैं बाय आस्किंग पीपल टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स कि फ़ाइल करो व्हेन इन फैक्ट इट्स नॉट लीडिंग टू एनी कंट्रीब्यूशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड ऑल्सो लीडिंग टू लैक ऑफ फोकस for the tax authority, and not just FBR but generally पाकिस्तान में जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, they face this challenge कि वो रजिस्ट्रेशन बढ़ाती रहती हैं और एक एपेटाइट है कि जी हमने नंबर्स गेम पूरी करनी है in terms of bringing more and more people, but
जहाँ पे एक्चुअल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, जैसा मैंने आपको मेंशन किया कि आपका रिटेल सेक्टर है, होलसेल एंड रिटेल सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम लोग ड्राइव एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, आई डोंट मीन टू से कि एक फार्मर को आप जाके पकड़ें. वी टॉकिंग अबाउट लैंड ओनर्स जिनकी अच्छी लैंड होल्डिंग्स हैं और उन्हें ज़मीनें ठेके पे दी हुई हैं या खुद भी फार्म कर रहे हैं. बट दीज आर हाई इनकम इंडिविजुअल्स हु एन्जॉय वेरी लो टैक्सेस, क्योंकि आपके टैक्स रेट एग्रीकल्चर इनकम पे है ही बहुत कम. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड टू डिटेक्ट कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी कितनी. अनलाइक अस, हमारी इनकम तो सैलरी इनकम है, उस पर विद होल्डिंग कट जाता है, तो वी नो कि क्या आपकी इनकम थी. बट इन एग्रीकल्चर में वी डोंट सी दैट. सो अगर पाकिस्तान में देखें, और आई थिंक इसको हमें थोड़ा सा एक होलिस्टिक लेंस से देखना चाहिए कि हमारा फोकस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन कि जी रेवेन्यू बढ़ाना है, हमने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, इसीलिए हम फाइलिंग भी बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लेके आ रहे हैं. और हमें नज़र आ रहा है, वी आर लर्निंग कि वो हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे, वो जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो अभी भी वहीं पर रुकी हुई है. तो वी नीड टू थिंक अबाउट कि इज़ दिस द बेस्ट अप्रोच, हमें क्या ये नंबर गेम खेलनी और क्या लोगों के पीछे भागना इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. और ऑन द अदर साइड अगर आप देखें एट द इकोनॉमिक लेवल, व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट वी टॉक्ड अबाउट कि टैक्सेशन इज़ ऑल्सो सेटिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. तो आप जब हर जगह पे लोगों को पकड़ रहे होंगे, सो टैक्सेशन का गोल शुड नॉट बी टू स्टॉप बिजनेसेस फ्रॉम ग्रोइंग. लाइक इसमें कहा जाता है जनरली कि जी टैक्सेशन इज़ अ कैट एंड माउस रेस, के आप पकड़ रहे हैं, बट यू डोंट वांट टू किल द माउस. लाइक आप बेसिकली आप ये नहीं चाहेंगे कि आप बिजनेसेस की ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और बिज़नेस ग्रो ना कर सकें. व्हाट यू वांट इज़ फॉर इफेक्टिव टैक्सेशन, एफिशिएंट टैक्सेशन, के बिजनेसेस जो हैं वो थ्राइव करें, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें, और टैक्सेशन जो है कम से कम उन पे बर्डन डाले और कम से कम उन पे लिमिटेशंस लेके आए. सो दैट्स द चैलेंज वी नीड टू सॉल्व. सो ये जो रजिस्ट्रेशन ड्राइव है, नंबर फाइलिंग करना, फाइलिंग रेट बढ़ाना, दिस इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस ऑन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से आपके बिजनेसेस ग्रोथ जो हैं वो लिमिट हो रही हैं. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल एंड we can move on with our conversation. So इस वक्त FBR में for example there are a lot of distortionary policies जहाँ पे आप thresholds बना देते हैं. So threshold for example ये है कि आप कहते हैं कि जी आपने registration तब होगी जब आप 6 मिलियन से ऊपर for example आपकी सेल्स हैं, या आपने कॉर्पोरेट बनना है, अगर एक ख़ास लिमिट है, अगर आप उससे ऊपर आपकी सेल्स हैं 1 साल की तो आप कॉर्पोरेट बन जाएंगे. So हमने इस तरह के thresholds अपने टैक्स कोड में डाले हुए, और काफ़ी सारे हैं इस तरह के थ्रेशोल्ड. अब उससे हम ये नहीं सोचते कि हाउ बिजनेसेस आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट. लाइक हमें लगता है कि यार अगर ये कंपनी बड़ी हो गई है, इस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, इससे ज़्यादा लो. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इट डज इज़ कि वो कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज करता है कि डू नॉट ग्रो, डू नॉट बिकम बिग. और हमारा चैलेंज, जो मेन चैलेंज है पाकिस्तान का एज अ कंट्री, वो ये है कि वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, वी नीड टू मेक फर्म्स दैट ग्रो, दैट कम्पीट इन द वर्ल्ड, दैट एक्सपोर्ट. वो सारा कुछ हमारी टैक्सेशन पॉलिसी उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है कि वी आर एक्टिवली ट्राइंग कि बिजनेसेस डू नॉट ग्रो, डू नॉट बिकम लार्ज. So taxation, of course, revenue generation is a very important factor, but it's not just revenue generation. आपको देखना है कि businesses की environment क्या आप create कर रहे हैं, and are you creating conditions जहाँ पे business thrive करें और आगे grow. So this takes me to your own work, right? So you've been working with electronic point of sale systems. अब इसमें lay it out for us again. So how are these systems expected to increase compliance? And I want you to tie this to what you just said about business incentives. So उनका क्या incentive है कि वो इस चीज़ को adopt करें? And policy makers की क्या strategy होनी चाहिए कि वो उनके incentives distort ना करें via these systems? So definitely, yeah. So I think electronic point of sale, for those who don't understand or who don't know about this area, basically taxation is an information problem. एक गवर्नमेंट जो है उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एक बिज़नेस या एक इंडिविजुअल उसकी एक्चुअल सेल्स कितनी है या एक्चुअल इनकम कितनी है. सो गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में किया जाता है कि वो आप डिफरेंट तरीके ढूंढते हो, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट तरीक़ों से आप पता करने की कोशिश करते हो कि इसकी इनकम कितनी थी या इसकी सेल्स कितनी थी. सो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो हैं, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जहाँ पे आप एक डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं एट द बिजनेस फ्रंट, और द आइडिया इज़ कि एनी टाइम अ ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस इन दैट बिजनेस, वो उस डिवाइस से
गुजरेगी और वो डिवाइस जो है वो रियल टाइम में उसको टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देगा. सो इन अ वे देयर इज दिस इंफॉर्मेशन देन विद द गवर्नमेंट, विद द टैक्स अथॉरिटी, जिसको वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि जी ये देखें आपकी ये इतनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, क्या आपने उस पर पूरा टैक्स पे किया या नहीं किया. So in theory, these point of sale devices are great because they solve exactly this information problem, or they are likely to improve compliance. It should be कि जब आपकी information real time में government को report हो रही है, then the businesses should actually face strong disincentive to deviate from that what is reported through these devices. So in theory that's how it's supposed to work, but we know कि हमेशा जो in theory है वो actual में होता नहीं है. So we have done this analysis in KP and Punjab as well. और वहाँ पे हमने देखा कि जो इनिशियल वॉलंटरी कंप्लायंस की गई है, वॉलंटरी कंप्लायंस से मतलब है कि बिजनेसेस वर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ दीज डिवाइसेस, बट दे वर गिवन इंसेंटिव कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल केपी में इंसेंटिव है कि आपको 13% के बजाय 5% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस पे. सो वो उस पर कुछ बिजनेसेस ने अडॉप्ट किया, थोड़ा केपी ने पुश भी किया, KPRA ने कि इसको इंस्टॉल किया जाए. और what we find in that work is कि शुरू में it does lead to improvement in all the things that we care about, like कि फाइल रोक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, जो सेल्स उनकी एक्चुअल रिपोर्ट कर रहे थे क्या वो सेल्स बढ़ना शुरू हो गई हैं. सो वी सी कि वो सारे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इन फ्रॉम अ रेवेन्यू परस्पेक्टिव वो आ रहे हैं. बट अगेन वी नीड टू सी कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट द एनवायरनमेंट वी आर इन, स्पेशली KP में एंड पंजाब में भी टू लॉट ऑफ एक्सटेंट, there is very limited enforcement capacity, और जिसको हम स्टेट कैपेसिटी बोलते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी रेट है कि वो जाके एक्चुअल में इन्फोर्स करवा सकती हैं. सो दैट इज़ वाई व्हाट वी फाइंड इन आवर वर्क कि शुरू में ये डिवाइसेस इफेक्टिव तो हैं, ये थोड़ा सा डिज़ायरेबल जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि चीज़ें मूव करें वो करती हैं, बट इवेंचुअली वो इफेक्ट्स जो हैं वो कुछ मंथ्स के बाद ही डिसिपेट हो जाते हैं. लाइक आपके पास जिन बिजनेसेस ने अडॉप्ट किया था दे जस्ट लाइक stop reporting accurately or stop reporting their actual sales, क्योंकि उनको नज़र आता है कि there is no enforcement being done on these things, right? और it is funny because when we look at the data we see कि यार आपको नज़र आ रहा है कि devices पे उसकी let's say 1 लाख रुपए की सेल है and this person is or this business is reporting only 50,000 worth of sales. So आपको नज़र आ रहा है कि there is a huge discrepancy, but then आपके देखते हो कि गवर्नमेंट में कितनी कैपेसिटी है कि वो एक बिज़नेस को उस पर एक तो they can do this sort of analysis कि कितनी discrepancies आ रही हैं and then act on it and then follow through with the businesses. So वहाँ पे I think just to summarize, given these results, one challenge that we see from businesses, or you asked about कि इसमें policy wise हम क्या कर सकते हैं, businesses का जो कंसर्न आता है वो ये आता है कि यार वाई अब आपने मेरे पास ये डिवाइस लगा दिया, मैं टैक्स नेट में भी हूँ, रजिस्टर्ड भी हूँ, मैं सब ये कर रहा हूँ, लेकिन जब कस्टमर मेरे पास आता है वो कस्टमर आके मुझे कहता है कि जी मैं आपसे ये टैक्स क्यों पे करूँ, क्योंकि जो साथ वाली दुकान है या साथ वाला बिजनेस है वो तो मुझसे टैक्स नहीं चार्ज करना, तो आई वुड रेदर गो देयर और मैं आपके साथ नहीं करूँगा. सो इवन जो आपके रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जो टैक्स नेट में हैं उनको भी ये नज़र आता है कि यार इट्स नॉट कम्पेटिटिव. मैंने अगर 13% या इवन 5% भी आपने ऊपर चार्ज करना है अपनी प्राइस के ऊपर, तो यू आर कम्पीटिंग विद ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर जो कि 0% चार्ज कर रहा है. So until we do this at a large scale, जिसको आप कह सकते हैं कि वो जो social norms की हम बात कर रहे थे कि you need to change those norms कि if everyone is paying that, then people do not have that excuse कि यार वो तो नहीं पे कर रहा, क्योंकि when everybody is doing it, तो तब आपका एक इंसेंटिव है या आपका डिसइंसेंटिव तरह कम हो जाता है कि मैंने अब टैक्स पे नहीं करना क्योंकि एवरीवन इज डूइंग इट एंड इट इज़ कॉन्सिक्वेंशियल. सो आई थिंक जो ये FBR ने भी शुरू किया था Tier 1 Tier 2 रिटेलर्स की लिस्ट बना के और उस पर करना शुरू किया, दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज आई गेट वाई वी डू इट. It's difficult to bring everyone on board, but at the same time if you have an informal economy going with the formal economy, it makes it really really hard for businesses to stay formal. So होता ये है कि a lot of businesses then switch to informal sector, which is worse. प्रोडक्टिविटी उनकी इससे अफेक्ट होती है, या फिर दे एंड अप एवेडिंग, वो फिर गवर्नमेंट से छुपाते रहते हैं अपनी एक्चुअल जो सेल्स या इनकम से. So this is the challenge, and I think eventually for me I feel like we have to change the norms. Like that's the one thing we would really want to nail here. Yeah, no, but you're right. I mean, in the sense that the kind of narrative we hear from the FBR and KPRA etc. सब जो है वो
आपको इंसेंटिव यही कह रहे होते हैं कि जी देखें आपको टैक्स देना होगा, इट्स 5% वर्सेस 13% एज यू सेड, बट इट्स effectively not 13% for them. The alternate is 0, right? So it's like I don't have to pay tax at all, और मैं आपके 5% दे रहा हूँ तो मैं क्यों दूँ? अभी I went to this नाश्ता place in Lahore. I should say the name, but कड़ाई तो वहाँ पे वो मुझसे पूछते हैं कि आप जी कार्ड, मैंने कहा मैं कार्ड पे पे करूँगा, मेरे पास कैश नहीं है तो I'll pay with card. So they're like कार्ड पे 5% टैक्स होगा versus 0%. Right. So they were very vocal about this. So that's the social norm, right? So it's not as if कि ये कहते हैं कोई आपको होएगा कि because it's good for you, it's good for me. Prices are lower for you and for me. So yeah, social norms there. But I think social norms का इसमें change करना, just picking up something you said, is enforcement is low. So जब तक enforcement low रहेगी, social norm का change होना भी is going to be difficult, right? So there has to be some push to this change in social norm. People aren't just going to in tandem start to pay taxes unless they're kind of pushed to do so. Yeah, आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ उसकी मैल्कम ग्लैडवेल की टिपिंग पॉइंट्स, राइट? सो वी नीड द टिपिंग पॉइंट के किस पॉइंट पे जाके वो नॉर्म्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे. वी नीड टू डू दैट. और उस पर आई थिंक इट्स अ गुड सेगवे इनटू माय वर्क इन पंजाब, जो पंजाब में हम कर रहे हैं. सो पंजाब में हम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि वेयर इज़ दैट टिपिंग पॉइंट, और किस तरह से हम एक विद द हेल्प ऑफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हाउ कैन वी गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे एक बिज़नेस जो है वो इस कंसर्न की वजह से कि यार वाई शुड आई पे टैक्स जबकि मेरा कंपेटिटर पे नहीं कर रहा, तो उस कंसर्न की वजह से वो ना पे कर रहे हैं. सो हमने इस पे काफ़ी पिछले 2-3 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं. और just to give you a sense, and I think it will be interesting for viewers as well, how applied research is done on these kind of questions and on the field. हमने किया ये कि हमने पूरी लाहौर को एक डिफरेंट मार्केट्स में डिवाइड कर दिया. सो थिंक ऑफ कि आप DHA ब्लॉक में जाते हैं तो वो एक मार्केट है, और यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं. सो रेस्टोरेंट्स, राइट? सो रेस्टोरेंट्स जितने भी DHA ब्लॉक Z ब्लॉक में हैं, थिंक ऑफ इट एज वन क्लस्टर, वन मार्केट. सिमिलरली MM आलम रोड है आपकी, वो एक क्लस्टर है. फूड स्ट्रीट चले जाएँ, वो एक क्लस्टर है. सो राया चले जाएँ आप, ये एक क्लस्टर है. सो हमने पूरे लाहौर को डिफरेंट क्लस्टर्स में, मार्केट्स में डिवाइड कर दिया. एंड ऑल दीज बिजनेसेस दैट आर विद इन दैट क्लस्टर, दे आर कम्पीटिंग विद ईच अदर. सो आप अगर MM आलम पे जाते हैं, आप किसी एक जगह पे खाना खा रहे हैं, दे केयर कि उनके जो इर्द गिर्द बिजनेस लोकेटेड हैं वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर वो नहीं कर रहे तो दे ऑल्सो हैव इंसेंटिव टू नॉट चार्ज टैक्सेस. और अब विद द हेल्प ऑफ टैक्स अथॉरिटी हम कर ये रहे हैं कि हम वो टिपिंग पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं कि किस स्टेज पे जाके हम ये नॉर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं. अभी जो एग्जिस्टिंग हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आती है उसमें देयर इज़ अ ह्यूज चंक एट 0%, कि अभी तो आपकी 0% कंप्लायंस है. बट देयर इज़ ऑफ कोर्स वेरिएशन विद इन आपके जो हाई इनकम नेबरहुड्स हैं, वहाँ पे कंप्लायंस रिलेटिवली बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लो इनकम नेबरहुड्स. बट वॉट वी आर डूइंग इज़ कि हम एक, जिसको हम अपनी इकनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक्सोजेनस शॉक देते हैं, हम डिफरेंट क्लस्टर्स में इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं टू डिफरेंट लेवल्स. सो फॉर एग्जांपल एक क्लस्टर है वो 60% पे कंप्लायंस वहाँ पे ले जाएंगे, दूसरे पे 50 पे चली जाएगी, फिर 30 पे चली जाएगी. सो वी आर डूइंग दैट, एंड आवर होप इज़ के मे बी देयर एग्जिस्ट दैट पॉइंट कि जिससे ऊपर अगर आप लोगों को पुश कर दें तो उसके बाद वी सॉर्ट ऑफ हैव टेकन केयर ऑफ दैट बैड इक्विलिब्रियम, और हम एक अच्छे इक्विलिब्रियम, एक अच्छे नॉर्म्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. So that research is ongoing, or my hope is that once we find that tipping point or that threshold, then that is something which is very relevant to the policy. क्योंकि आप टैक्स अथॉरिटी को then कह सकते हैं कि यार ये एक पॉइंट है, rather than आप थोड़ा हर जगह करो. So there is this threshold जिससे ऊपर आपने पुश कर दिया एक दफ़ा, उसके बाद आपका काम आसान है. So then you can target your interventions in a way कि यार इस tipping point से क्रॉस करवाना है, and then it will sort of टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जो कंप्लायंस है इम्प्रूव होती रहेगी. बट अगेन दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग. इसको करना जो है एज वी फाइंडिंग आउट इन आवर फील्ड सेटिंग कि वो इवन पुश करना शुरू में कंप्लायंस लेवल्स को, दैट इज़ ईजियर सेड देन डन. But that's what we are working on, and I'll have more to tell you in about a year. Yeah, I look forward to it. I mean, this is really interesting, and I mean, exactly इसी चीज़ पे भी मैं बात कर रही थी कि जब तक enforcement ना हो, so very interesting that you're working on it. I mean, I like your research because you go after all of the most difficult people. So एक आप ताजरों के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरा property taxes में गए. So उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि so what is the issue with property taxation? And I may be ignorant in this, but I thought that property पे tax हो जाता, but apparently not enough.
So what is the issue in property taxation that you're trying to say in your research? So property taxes जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टैक्स है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस को हम कहते हैं कि दे आर ऑल्सो लोकल टैक्सेस, दे आर अनलाइक इनकम टैक्स, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि मेरा टैक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स जो है वो डिफेंस पे भी जा रहा है, वो आपकी पुलिस को भी जा रहा है, आपके स्कूल्स पे भी लग रहा है, सो यू डोंट नो हाउ दैट इज़ बीइंग स्पेंट. बट प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो एक वन ऑफ द वेरी फ्यू टैक्सेस है जो कि बहुत विजिबल होता है, एंड यू कैन सी कि वो कहाँ पे स्पेंड हो रहा है. सो पाकिस्तान में जो हमारा एक सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव अ 3-tiered सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फिर लोकल गवर्नमेंट है. अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट्स हमारे यहाँ एम्पावर नहीं हो सकी हैं, और अभी तक हम इस सिचुएशन में हैं कि वी डोंट हैव इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस. हमारे यहाँ पर लोकल इलेक्शंस उस तरह से नहीं होते. हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाते रहते हैं, हर 2-3 साल बाद उसको रिवाइज करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू मेक प्रोग्रेस ऑन दैट. मुशर्रफ ने किया था अपने दौर में आके, बट उसके बाद से हमारे पास वो एक इफेक्टिव सिस्टम नहीं बना. सो प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं दे आर सपोज टू फाइनेंस द लोकल डेवलपमेंट. सो होना ये चाहिए इन थेरी कि जो भी आप जिस रीजन से जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्सेस में, वो उसी रीजन की डेवलपमेंट में लगेगा. वहाँ पे सड़कें बनानी है, वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट फिक्स करनी है, वहाँ पे स्कूल्स आपने फंड करने हैं लोकल लेवल पे, जो छोटे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको आप उससे फंड कर सकते हैं. पब्लिक लाइब्रेरी चलानी है आपने, पार्क्स मेंटेन करने हैं. सो जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं दोज आर सपोज टू बी फंडेड बाय प्रॉपर्टी टैक्सेस, जिससे होता ये है कि फिर लोगों का एक इंसेंटिव अलाइन हो जाता है कि यार मैं इस नेबरहुड में रहता हूँ, मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैं इस एरिया को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, उसकी वजह से यू वांट टू पे टैक्स. अब वो आपकी लोकल डेवलपमेंट को फाइनेंस करते हैं, और फिर आप देखते हो उससे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ भी ऊपर जाती हैं जैसे जैसे एरिया ग्रो करता है, एंड दैट अगेन बेनिफिट्स द पीपल हु आर लिविंग इन दैट रीजन. सो प्रॉपर्टी टैक्स उस सेंस में दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू वर्क. पाकिस्तान का चैलेंज ये है, जस्ट लाइक ऑल अदर टैक्सेस, कि हम जो टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहे हैं वो इज़ वेरी नेग्लिजिबल. सो अली चीमा का इस पर काफ़ी काम है. ही शोड इन वन ऑफ हिज वर्क के पंजाब में जो टैक्स कलेक्शन है वो 0.05% है पंजाब की GDP की. इसको अगर आप कंपेयर करें ऑन एवरेज ऑफ लो इनकम कंट्रीज़, वो 0.3% है, विच इज़ लाइक काफ़ी फोल्ड्स ग्रेटर दैन पंजाब्स. और अगर आप हाई इनकम कंट्रीज़ को देखना शुरू कर दें तो वो 3% से भी ऊपर है. सो हम 0.05% पे हैं, नॉट इवन 0.1 बट 0.05, लाइक सो लेस दैन so that's where we are. So उसमें अब काफ़ी challenges आते हैं. So property taxes, it's a very deep topic. A lot of people are working on this. Arichima, as I mentioned, has a lot of work on this. I have been working in this area, and it's very fascinating. So इस वक्त जो मेन चैलेंज हमारा लो कलेक्शन तो है ही, बट उसके फर्दर उसके फिर रीजंस हैं कि क्यों हमारी कलेक्शन इतनी लो है. एंड वन ऑफ द रीजंस इज़ इवेंचुअली कि हाउ वी वैल्यू द प्रॉपर्टीज़. जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस हैं वो कैसे होती हैं. सो हिस्टोरिकली हमारा इस वक्त जो एक्ट है वो प्रॉपर्टी टैक्स का, वो 1958 का एक एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेसिकली सिस्टम था, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली कि आपकी जो प्रॉपर्टी का एक एनुअल रेंटल वैल्यू एस्टिमेट की जाती है, जिससे कहा जाता है बेसिक आइडिया है इसके अगर इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जाए तो कितने ये प्रॉपर्टी अर्न कर सकती है, और उसकी एक 5% पंजाब में टैक्स है कि 5% उस पर आप टैक्स लगाते हो. द चैलेंज इज़ कि वो जो एनुअल रेंटल वैल्यूज़ हैं वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, राइट. सो अगर आप उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल रेंटल वैल्यू देखें और उसकी जो देखें जो असेस की जाती है वो बहुत डिफरेंस है उसके अंदर. और ऑल्सो के जब आप उसको वो देखते हैं उसके साथ जो ये जो वैल्यूज़ हैं दे आर सपोज टू बी अपडेटेड एवरी 5 years. जो लॉ कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 years के बाद अपडेट होनी चाहिए. बट लास्ट जो पंजाब में वैल्यूएशन हुई थी वो 2013 में हुई थी, उसके बाद से तक कुछ नहीं हुआ उस पर. फिर उसके बाद हमारे अब इस पर ऑफ कोर्स मेरी अपनी एक इस पर एक रिपोर्ट है, स्टडी है जो हमने इसके CDPR के लिए और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के लिए कमीशन की थी. सो वी कंपेयर्ड जो वैल्यूएशंस हैं वो किस तरह से कितनी क्लोज हैं वो मार्केट वैल्यू के. सो वी लुक्ड एट कि मार्केट वैल्यू एक प्रॉपर्टी की क्या है. आपकी एक FBR की एक लिस्ट होती है, उसको हमने देखा जहाँ पे FBR नोटिफाई करता है रेट्स, वो दैट वाज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ व्हाट द एक्चुअल मार्केट वाज. एंड देन देयर इज़ अ प्रोविंशियल लेवल जिसको DC रेट्स बोलते हैं, वो एक लिस्ट होती है, वो दैट वाज 5 times लोअर दैन व्हाट द मार्केट वैल्यू वाज. सो हैविंग सेड दैट जो DC रेट्स अंडर वैल्यूड हैं, एक पॉजिटिव साइड पे इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं कि वी आर ट्रांजिशनिंग टू अ डिफरेंट सिस्टम
जिसको कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन CVT के नाम से कहा जाता है, जहाँ पे द बेसिक आइडिया इज़ कि आप जो टैक्स है वो ना कि एनुअल रेंटल वैल्यू के बेस पे लगाएं, आप टैक्स करें प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है उसकी बेसिस पे, राइट. सो अली चीमा का इस पर काम है, जहाँ पर उन्होंने शो किया है कि जो हमारा एनुअल रेंटल वैल्यू सिस्टम है वो हाईली रिग्रेसिव है. जिसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ जो कि लेट्स से करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बट उसकी जो एनुअल रेंटल वैल्यू आप एस्टिमेट करें तो वो बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज़ जो कि इतनी हाई वर्थ नहीं होंगी लेकिन उन पे एनुअल रेंटल वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है. सो इट क्रिएट्स दीज इक्विटी कंसर्न्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंड द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हैज़ पॉजिटिवली रिस्पॉन्डेड एंड दे आर नाउ ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स अ कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन सिस्टम. उसमें दे आर यूजिंग DC rates as a basis of valuation, जिसमें as we mentioned, as you talked about कि DC rates are undervalued. So there is going to be that concern कि अभी भी हम जब properties की जो value कर रहे हैं वो उनकी market value पे नहीं कर रहे, but it is still a step in the right direction. और globally अगर आप देखें जो property की valuation है, it's a very tricky matter कि किस तरह से आपने property को value करना है. There are a lot of things changing. आप उसको किस तरह से रियल टाइम में लेके आए. डिफरेंट कंट्रीज़, जो कनाडा, जो ब्रिटिश कोलंबिया है, they have a valuation completely independent from the assessment part. या enforcement part. So इनकी एक अथॉरिटी है जो सिर्फ valuation करती है, but they are not part of tax collection. और जो उनकी टैक्स अथॉरिटी है वहाँ पे वो फिर वैल्यूएशन को गिवन लेती है एंड देन देयर जॉब इज़ टू एनफोर्स. पाकिस्तान में हमारे यहाँ वैल्यूएशन और असेसमेंट ये सारा कुछ एक्साइज एंड टैक्सेशन पे हो रहा है. बट विद दिस ट्रांजिशन टू कैपिटल वैल्यू सिस्टम we are getting to a point where we could ideally have the valuation part handled by the Board of Revenue, क्योंकि they are the ones responsible for notifying DC rates. तो वो कर रहे हैं. We need to improve how we do that, how we notify DC rates. But the valuation could be centralized at the province level वहाँ पे, and then we can have excise and taxation and eventually local governments. That's where we want to go. Okay, local government should be part of this process of tax collection, क्योंकि property tax is a local tax. हमारा excise department, because it's a provincial department, उनका interest या उनका incentive align नहीं है इस चीज़ पे कि वो locally वो tax को collect करें. So there's an issue of incentives alignment here. But अगर ये टैक्स आप लोकल गवर्नमेंट्स को दे दें और make them part of the decision making, make them set their own tax rates, make them set their own tax policy at the local level, वहाँ से फिर एक incentives alignment हो जाती है, क्योंकि they face incentive to collect because उन्हीं को वो टैक्स मिलना है और उन्हें लोकल डेवलपमेंट पे लगाना है. So this is a very interesting space जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स की space है, और उसमें there is a lot of things that need to be done at the policy level, and there is also a lot that can happen at the administration level कि हम किस तरह से इसको collect करते हैं, and things are working. हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, and there are other people that are working in this area which and I feel like still this is something with there's still room for a lot more work. And if you have listeners who are interested and students who want to learn more about this, they should definitely get involved. It's a fascinating tax. I think it's where you can see a lot of interesting issues. But also this issue of जिसको हम बात करते हैं कि सिटीज़न और स्टेट का जो ट्रस्ट है, और वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे यू कैन आस्क द टैक्स इंस्पेक्टर कि जी आपने मेरे टैक्स मनी से किया क्या है, एंड दे कैन ऑल्सो शो यू कि यार ये सड़क बनी है, ये बना है, क्योंकि इट्स सपोज टू बी स्पेंड दैट वे. इसमें one last thing I would mention is this study by Mavish Shaukat at World Bank, Ben Olken, Adnan Qadir. They are actually trying to create that social compact in property taxes in Punjab, जहाँ पे वो so they elicited people's preferences कि आपको अपने neighborhood में क्या चाहिए. So for example, they would come to you, they would ask कि आपके लिए सबसे important चीज़ क्या है. कोई कहेगा मेरी सड़क बना दें, कोई कहेगा ये कूड़े का यहाँ पे डस्टबिन नहीं लगा हुआ, कोई कहेगा जी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ख़राब है. So they elicited those local preferences, and then they routed those property taxes towards those services that the citizens demanded. And they find कि it does lead to positive willingness to pay, right? अब उसमें there are challenges कि are people able to make that connection कि यार मेरे पैसे से ये street light fix हो या नहीं. They try to do it very aggressively, but that's also one part of this discussion कि how do you inform taxpayers, how do you make it clear in their head कि यार ये जो tax money है, this is the one that is financing your services.
So again, very interesting space to work. And another argument for why we need local governments. I hope some policymaker is also listening to that point that you're making. But okay, so just coming back to your work in this space, because so what I understand is massively undervalued property, which needs to be re-evaluated. But जो re-evaluation का है उसमें भी एक इशू निकलेगा कि जो re-evaluate कर रहा होगा उसके शायद इंसेंटिव अलाइन ना हो, जो टैक्स पेयर है शायद उसको भी ये लगे कि जी उसने जो मेरा अब री-evaluate करके दिया है मे बी उससे ज़्यादा टैक्स लगा दिया मैंने इतना नहीं एट्सेट्रा राइट. सो ऑल ऑफ दैट. Now you have a very unique solution for it, which is using technology. So I was hoping you could talk a bit about that and also kind of link it to yehi wali valuation, the struggle with ensuring that this is also something that people can trust and that it is enforceable and scalable. Yeah. No, definitely. So इसमें जो हमारा काम है that is focused more on the tax administration side, कि आप किस तरह से administration improve कर सकते हैं. So we take valuation system as given, कि चाहे आप annual rental value लगा रहे हैं, चाहे आप capital value TC rates use कर रहे हैं. So whatever you're doing, we take that as given. But then there is this question of कि जो tax inspectors हैं, those who are going to go in the field and who are going to assess कि ये property जो है ये residential है या commercial है, ये property जो है इसका area कितना है, ये property जो है rented है या owner occupied है. So a lot of these things that I'm talking about, they feed into the tax formula. They determine कि इस property का कितना tax बनता है. तो इस वक्त जो हमारा tax code है उसमें अगर आप commercial property हैं तो आपके पे tax rate बहुत ज़्यादा है, अगर आपका covered area ज़्यादा है तो आप पे tax rate ज़्यादा है, अगर आप मेन रोड पे हैं तो टैक्स रेट ज़्यादा है, ऑफ रोड पे हैं टैक्स कम है. सो ये चीज़ें हैं जो आपके टैक्स फार्मूला को अफेक्ट करती हैं, टैक्स रेट्स को अफेक्ट करती हैं. हम लोग यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हम जो विद ऑल दिस AI एंड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या हम प्रॉपर्टी के फ्रंटल इमेज से ये जो चीज़ें टैक्स फार्मूला या टैक्स लाइबिलिटी किसी प्रॉपर्टी की डिटर्मिन करती हैं, क्या हम उन फीचर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर विजन से. एंड द आइडिया इज़ नॉट टू रिप्लेस द ह्यूमन. वी आर नेवर सेइंग कि आप ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं विद AI. वी आर इन दिस स्टडी वी आर होपफुल कि वी कैन कॉम्प्लीमेंट द टैक्स इंस्पेक्टर्स एफर्ट्स. जब वो फील्ड में जाते हैं, मे बी दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम फाइंडिंग कौन सी प्रॉपर्टीज़ को मैंने असेस करना है, रीअसेस करना है, उनकी असेसमेंट को चेक करना है. सो वी कैन यूज़ द हेल्प ऑफ AI एंड कंप्यूटर विजन to actually help the tax inspectors कि ये properties हैं where the potential seems to be higher. These are the properties where it seems like what is recorded in the administrative data versus what is on the field, there is some discrepancy there, right? And hopefully that can direct tax inspectors' effort to the properties where there might be some potential. It might bring some sense of objectivity or transparency in the process, as you pointed out. In this work, we are also interacting with the taxpayers also. So एक तो part है कि हम tax inspectors जिन्होंने assessment करनी है, field में visit करने हैं, उनको कैसे facilitate कर सकते हैं with technology. But then there is also how this technology is going to impact the perceptions that people hold about the tax authority and the way they do the assessments. तो वहाँ पे we are communicating very effectively, or at least we hope we are trying to go communicate effectively with the taxpayers, and we are trying to see कि जब उनको ये process बताया जाए कि आपकी properties को इस computer vision के through या इस technology के through assess किया जा रहा है, does it improve their trust on the system? Does it allow them to become more responsible citizen or become more active citizens into this process? And of course, like then we have other layers of what we call treatments, but other layers of interventions, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने taxpayer को भी inform किया, tax inspector को भी facilitate किया, but what about the auditors, the ones who are monitoring the monitors, right? जो inspectors के ऊपर हैं. So whether this technology can help them do the audits more effectively. So that's where there's another potential कि किस तरह से हम technology को वहाँ पे integrate कर सकते हैं. So that's where we are, and again I would say this is a work which has been ongoing for some time, for more than a year. We are making good progress with all the government counterparts. They've been very
collaborative, and against the common perception, what I see with the government is that there is a lot of appetite for improvement. There's a lot of appetite for bringing change. But I think the challenge is these are not easy problems to solve. So if you are in the business of solving these problems, you have to really take a scientific approach and learn from your mistakes, improve them, and try again and improve them. So that's what we try to do, right? So when we run these experiments, we go in the field, we see what's working, what is not working, and we improve, we rerun these things. So that's what we need to do. And it's an iterative process. And I think it has to keep on going for this habit to form. And your norms keep change करने की भी बात है. वो कोई one-shot intervention से तो मुश्किल से ही होएगा. No, this is all fascinating work. I mean, all the best with it. I really look forward to these findings. As I said, not many people are working in this space, at least in Pakistan. And so this is something that would be really valuable. But I think just before we finish, because I think we're almost out of time, for any young researchers who are interested in public finance and taxation, what you've talked about is very different from what we learned in the textbook. As you said, wo theory mein hota hai, then you start to bring in incentives, you bring in distortions in the system, you bring in norms, and things change. So what advice would you give them for ensuring that their work has practical impact, right? So something that could actually bring about change. Yeah. No, I think I would second what you said, Kay. This is a space where we have very few people who are working. So, and for all the reasons we talked about in this conversation, this is a very critical issue for Pakistan, right? हमारा इस debt crisis जो है, borrowing जो है, वो भी इससे related है. A lot of macroeconomic problems, and at a very micro level, we see that this is very consequential. But we don't have enough people working in this area. There are very few. So we need to bring in more people. And generally, it is thought that taxation is a boring subject. Usse duri raho, pata nahi kya hai. But once you get into it, it's very exciting. In fact, I have this book recommendation that I would like to make. The book is called Rebellion, Rascals, and Revenue by Joel Stamrod and Michael Keane. It's a very interesting take on how taxation has been consequential in changing the fate of different countries, how it has led to wars, how it has led to so many revolutions in different parts of the world. So I highly recommend that book because this is something that's going to excite you and going to make you, and it's a very leisure read. It's not a technical read. It's something that you can read in your bedtime. So just get excited about this topic, learn what are the issues. To make practical impact, I think what we need to do is we need to understand what are the challenges that our policymakers, our bureaucrats, our government officials, what are the challenges that they are grappling with. And that's what we need to really understand as researchers, right? Because a lot of the times what we do is that हमारे अपने ideas होते हैं, which is great. We have thoughts, ideas we want to test out. But often we see that they are removed from what policymakers care about. Right? So if you want to have an impact and if you want policymakers to listen to your research, then try to understand what their challenges are and try to find answers to those problems. Right? So wo aapka jo hai, this is one advice that I would give. That's how you make impact. Talk to the policymakers. Most of my work in the taxation space is in collaboration with the tax authorities. It is challenging. I'm not saying that they are going to listen to everyone. When you go talk to them, it's really hard to create appetite for research. But as researcher, if you want to be taken seriously, you have to do this. They have to pay that shoe leather cost, try, keep at it, and hopefully there will come a bureaucrat that will listen to you. Thank you so much, Sher, for taking out the time. I think this is a good positive note to end at. I'm saying positive also because even though you said time lagega, but you're saying kuch ho jayega. So that's a good note to end at. But thank you so much, and thank you so much for sharing your work with us. It was a pleasure being here. Thank you for having me. Thank you. Bye.